Hello guys, welcome back to my channel, and today I am going to demonstrate everyone's favorite dessert, that is chocolate lava cake. And I must say these chocolate molten lava cakes are such indulgent treat, perfect for a special occasion yet easy enough for every day. You'll love the deep chocolate flavor and the warm liquid center. So let's get started. तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी हमें सबसे पहले एक लार्ज बॉल लेना है और मैं अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव करूँगी. एंड सीविंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड टू मेक योर केक फ्लफ़ी. तो मैंने अभी सबसे पहले इसमें हाफ कप प्लेन फ्लावर लिया है, 1/4 कप कोको पाउडर लिया है, एंड उसके बाद में हाफ कप पाउडर शुगर मिला रही हूँ, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, and a pinch of salt, and we have to sieve all the dry ingredients. So after mixing my dry ingredients, it's time to add a dash of vanilla extract. And now I'm going to mix all my wet ingredients. So I'm taking 1/4 cup of oil. You can use butter also, it's up to you. And half cup of milk. और आप जब भी कभी भी मिल्क डालो बैटर पे तो इट मस्ट बी रूम टेम्परेचर और a warm milk. Do not use cold milk. Now just whisk and combine until there is no lumps. तो ये आप देख सकते हैं हमारा बैटर रेडी है और हमें ऐसे ही लिक्विड कंसिस्टेंसी चाहिए. अभी मैं अपना सिलिकॉन मोल्ड ले रही हूँ. यू कैन यूज़ अल्मुनियम मोल्ड ऑल्सो. मैं इसे बटर से ग्रीस कर रही हूँ और इसे ग्रीस करने के बाद मैं कोको पाउडर इसमें डस्ट कर रही हूँ ताकि ये और चॉकलेटी फ्लेवर दे, और जितना भी एक्सेस है वो मैं निकाल दे रही हूँ. ऐसे करने के बाद मैं सारे मोल्ड में कोको पाउडर डस्ट कर लूँगी. एंड डस्ट करने के बाद मैं अपने बैटर को सिलिकॉन मोल्ड्स में पोर करूँगी. एंड मेक श्योर दैट यू डू नॉट ओवरफिल द बैटर, बिकॉज इफ़ यू ओवरफिल द बैटर योर बैटर may spill over the sides of the pan, and if the pan is not filled enough the cake may be dense or flat. So you must take care of this. You have to fill just 2/3 to 3/4 full. अब मैं अपने प्रिपेयर्ड मोल्ड को बेकिंग डिश पे डाल रही हूँ और उसके बाद मैं चॉकलेट चंक्स ले रही हूँ और सेंटर पे डाल रही हूँ. एंड इफ़ यू वांट मोर चॉकलेट इज़ ओजिंग आउट फ्रॉम योर केक तो आप और चंक्स ऐड कर सकते हो. एंड विद द हेल्प ऑफ स्पून आई एम जस्ट पुशिंग डाउन द चॉकलेट चंक्स. And now I'm going to keep this in a preheated oven for about 15 minutes. And now after taking out from the oven, I'm taking my offset palette knife और मैं इसे साइड से स्क्रैप कर रही हूँ पहले ताकि ये अच्छे से डिमोल्ड हो जाए. और अब मैंने एक प्लेट लिया है एंड इसको डीमोल्ड कर रही हूँ. एंड आप देख सकते हो अगर मैं अपने पैलेट नाइफ से इसे स्क्रैप नहीं करती तो ये इतने अच्छे से निकलता नहीं. एंड देन मैं इसमें आइसिंग शुगर डस्ट कर रही हूँ ताकि ये दिखने में भी अच्छा दिखे. And now it is done. It's time to cut, and you can see how beautifully the chocolate is coming out from the cake. I hope you enjoyed the video, and do not forget to like, share and subscribe my channel, and hit that subscribe button and the notification bell next to it so that you can get notified whenever I upload a new video. Thank you. Bye bye.